Hello students, welcome to the virtual class children. I hope you all are doing well, right? So I am your SST teacher, Sangmo ma'am. Okay children, in today's class, we will start with a new chapter, a new lesson, that is lesson 4, and the title is what? The desert living of the people. Alright, in our previous class, what we learned about the plains living of the people, and in this chapter, in this lesson, we will learn about the desert area. Alright, and the living of the people in that area. Alright, so without further ado, let us start with the lesson. Alright, so the students who all have book, just turn to page number 24 of your SST book and be ready with a pencil. Alright, and those students who doesn't have book, please refer to this video. Alright, so here let us start. First we will read, we will underline the difficult words, then I will explain it to you. Alright, so let us start. The desert living of the people. Right, so here desert is a flat land covered with a thick sheet of loose sand. The Thar Desert or the Indian Desert. The important areas covered by the desert include Barmer, Jaisalmer, Jodhpur, Bikaner, Suratgarh and Ganganagar. The Indian Desert extends from the Rann of Kutch in the southwest up to the borders of Haryana state in the northwest and from Aravalli mountain range in the east up to the borders of Pakistan. All these areas are hot and dry for a major parts of the year. Some parts of it are rocky. These desert areas receive very little rainfall. Okay, so we will do till here, alright children. So here let us underline this line. The desert living of the people. Alright, I told you before or I told you just now that in this chapter we will learn about the desert area of our country, right? And we will learn or we will discuss about what the people living in this डेजर्ट एरिया. ऑलराइट, तो हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे चिल्ड्रेन? हम लोग हमारे कंट्री के डेजर्ट एरिया, रेगिस्तान एरिया के बारे में पढ़ेंगे और वहाँ का लोग कैसे रहते हैं, क्या क्या करते हैं, वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन क्या क्या है, ऑलराइट, वहाँ का वाटर रिसोर्सेज क्या है, फार्मिंग और वहाँ का ऑक्यूपेशन क्या है, वो सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर में पढ़ेंगे. ऑलराइट, सो हियर desert is a flat land covered with a thick sheet of a loose sand. Underline this line. Desert is a flat land covered with a thick sheet of loose sand. This is the definition of desert. What is desert? A desert, it is a flat land which is covered with a thick sheet of loose sand, or desert is an area which is covered by a loose sand. You can say that also, right? तो ये क्या है? Desert means रेगिस्तान. ये क्या है? ये रेगिस्तान एक चपटा क्षेत्र है और ये यहाँ पर क्या होता है? रेत की रेत की मोटी चादर से क्या हुआ है? ढका हुआ है. As you can see here, this is the picture of what? Desert area. Or here also you can see the picture of desert area. This is the picture of desert area. And what is desert? A desert is a flat land where you can find a thick sheet of loose sand, or it is an area covered by a thick loose sand. सैंड का मतलब है मिट्टी, राइट, बालू. तो ये एरिया, डेजर्ट एरिया क्या है? यहाँ पर ये एक चपटा क्षेत्र है, फ्लैट प्लेन लैंड है, फ्लैट लैंड है, जहाँ पर क्या किससे भरा हुआ है? किससे ढका हुआ है? एक मोटी चादर के क्या है? रेत की मोटी चादर से ढका हुआ है. ऑलराइट, सो दिस टाइप ऑफ लैंड इज कॉल्ड व्हाट? डेजर्ट. तो ऐसे टाइप का लैंड को क्या बोलते हैं चिल्ड्रन? डेजर्ट. ऑलराइट, तो हमारे कंट्री का डेजर्ट क्या है? द थार डेजर्ट और द इंडियन डेजर्ट. व्हाट इज द नेम ऑफ द डेजर्ट ऑफ आवर कंट्री? इट इज थार डेजर्ट और द इंडियन डेजर्ट. ऑलराइट, तो
The name of the desert, okay, located in our country or present in our country is called what? The Thar desert or Indian desert. तो हमारे कंट्री पे भी क्या है ये, यहाँ पर दो डेजर्ट, एक डेजर्ट एरिया है दैट इज कॉल्ड व्हाट? थार डेजर्ट, और इसको इंडियन डेजर्ट भी बोले जाते हैं. ऑलराइट, एंड वेयर इज दिस लोकेटेड? ये कहाँ पर लोकेटेड है थार डेजर्ट और इंडियन डेजर्ट? इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, एज यू कैन सी हियर इन द मैप. ऑलराइट, यहाँ पर मैप पे दिया गया है, ये है जहाँ पर येलो कलर है, दिस पार्ट ऑफ एरिया इज व्हाट? राजस्थान. इतना भाग क्या है, कौन सा स्टेट है? ये राजस्थान स्टेट है. ऑलराइट, एंड ये थार डेजर्ट और इंडियन डेजर्ट कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर पाए जाते हैं? राजस्थान स्टेट पर. ऑलराइट, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द डेजर्ट that is found in our country? The name of the desert is the Thar desert or the Indian desert. All right, so after that, the important areas covered by the desert include Barmer, underline Barmer, underline Jaisalmer, Jodhpur, underline Bikaner, Suratgarh and Ganganagar. So these are what? ये क्या है ये सब? These are the important areas that is found in this desert region. All right, and these are the important cities, or these are the important areas which is found in this Indian desert or the Thar desert of Rajasthan state. All right, तो ये क्या है, यहाँ पर ये जो इंडियन डेजर्ट और ये थार डेजर्ट है जो राजस्थान पर लोकेटेड है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सिटीज़ और एरियाज है. ऑलराइट, जैसे कि क्या क्या है? बाड़मेर एक सिटी का और एरिया का नाम क्या है? बाड़मेर है, एक है जैसलमेर, एक है जोधपुर, एक है बीकानेर और एक है सूरतगढ़ और गंगानगर. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, here you can see, here is what? Ganganagar, here is Bikaner, here is Jaisalmer, here is Barmer. So these areas are the important areas. ये areas क्या है? एक important, okay, खास एरिया है. कहाँ पर? जहाँ थार डेजर्ट और इंडियन डेजर्ट पे क्या है? लोकेटेड है. ऑलराइट, देन आफ्टर the Indian desert extends from the Rann of Kutch, underline Rann of Kutch, in the southwest, underline southwest, up to the border of Haryana, you underline, state in the northwest. Alright, so here ये जो थार डेजर्ट और इंडियन डेजर्ट है, ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? From, it is extended, or it is extended from this Rann of Kutch in the southeast. Okay, ये साउथ नीचे के है, इंडियन डेजर्ट के नीचे की तरफ साउथ बोलते हैं, साउथ ईस्ट यहाँ पर है. तो ये है, एज यू कैन सी हियर चिल्ड्रन, यहाँ पर रान ऑफ कच्छ यहाँ पर है. ओके, रान ऑफ कच्छ ये जगह पर है. तो ये थार डेजर्ट और इंडियन डेजर्ट साउथ ईस्ट के रान ऑफ कच्छ से लेकर ऊपर पे नॉर्थ के बॉर्डर ऑफ हरियाणा स्टेट यहाँ पर है चिल्ड्रन. ओके, यहाँ पर हरियाणा स्टेट है और ये हरियाणा के बॉर्डर है, बॉर्डर लाइन है. ओके, बॉर्डर एरिया. तो ये हरियाणा के बॉर्डर एरिया से लेकर साउथ ईस्ट के रान ऑफ कच्छ के यहाँ तक क्या है? फैला हुआ है. ऑलराइट, ऊपर से नॉर्थ टू साउथ ऐसे फैला हुआ है. देन आफ्टर, फ्रॉम Aravalli mountain range, underline Aravalli mountain range, in the east, underline east, up to the border of Pakistan. So east यहाँ पर है, as we all have learned the major direction, that is north, south, east and west, right? तो इस साइड ये जहाँ पर आप देख सकते हैं येलो कलर की यहाँ पर बॉर्डर, यहाँ पर है अरावली माउंटेन रेंज यहाँ पर है. ऑलराइट चिल्ड्रन, तो ये अरावली माउंटेन रेंज के यहाँ से ईस्ट से लेकर पाकिस्तान यहाँ पर है चिल्ड्रन, पाकिस्तान के बॉर्डर तक क्या है? ईस्ट टू वेस्ट फैला हुआ है. Alright, I hope you understood. Alright, I hope you all are understanding children, right? So all these areas are hot and dry for a major part of the year. तो ये पूरा रेगिस्तान एरिया और this whole of the Indian desert, or what? The Thar desert, it is what type of climate do you find there? It is hot and dry throughout the year. Alright, so ये पूरा रेगिस्तान जो एरिया है, रेगिस्तान का भाग है, यहाँ पर गर्मी और सूखा और गर्म और
क्या है, सूखा क्या है, ऐसे टेम्परेचर पूरा ईयर, पूरे साल ही पाए जाते हैं. ऑलराइट, सम पार्ट ऑफ इट्स आर सम पार्ट ऑफ इट आर रॉकी, अंडरलाइन रॉकी. तो इसका कुछ हिस्सा क्या है, पत्थरीला है. तो यहाँ पर डेजर्ट एरिया में कोई कोई पार्ट और कोई कोई भाग पत्थरीला भी पाए जाते हैं. रॉकी मीन्स पत्थरीला. ओके, this desert area receives very little rainfall, as you all know that, right children. तो desert area में क्या होता है, बहुत कम बारिश होते हैं, वहाँ पर बहुत कम बारिश पाए जाते हैं. right? So till here you mark it. I hope you understood. Okay, receive that this desert area receives very little rainfall. Also you underline this line. All right. So what we learned in this paragraph, children, we learned that the desert or the living of the people, right? And in under this the desert, the living of the people, what we learned, what is desert, children? हमने क्या पढ़ा कि desert, it is a flat land which is covered by what, thick sheet of loose sand. And the desert that is located in our country, or the desert of our country, what is its name? Its name is Thar Desert or the Indian Desert. And this Thar Desert and Indian Desert is located in the state of Rajasthan. We learned it. And there are important areas like Barmer, Jaisalmer, Jodhpur, Bikaner, Suratgarh, Ganganagar, which is located in the Thar Desert or the Indian Desert. Alright, and this Indian Desert is located from Ran of Kutch in the southeast to the border of Haryana in the north, and from Aravalli mountain range in the east to border of Pakistan in the west, right? So all of this, what we learned is this, the whole of this Indian desert gets what type of temperature or what type of climatic condition, hot and dry climatic condition, all right, throughout the year. And we even read what we read is that here what type of areas do you find, some of the part of this desertic area is rocky, right? And this desertic area receives very little what amount of rainfall. all right, so हमने इतना तक पढ़ा. आई होप यू अंडरस्टूड चिल्ड्रेन, राइट? तो हमने पढ़ा कि ये पूरा क्या है, रेगिस्तान क्या है, एक चपटा क्षेत्र है, और ये रेत की क्या है, मोटी चादर से ढका हुआ होते हैं. और ये हमारे देश के जो रेगिस्तान एरिया को क्या भी बोलते हैं, इंडियन डेजर्ट और थार डेजर्ट भी बोलते हैं. राइट, तो इंडियन डेजर्ट और थार डेजर्ट में बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंट एरियाज है, जैसे कि बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, सूरतगढ़, गंगानगर, ऐसे सिटीज और एरियाज यहाँ पर लोकेटेड है. और यहाँ पर ये इंडियन डेजर्ट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, नीचे साउथ में रान ऑफ कच्छ से लेकर ऊपर हरियाणा के बॉर्डर तक फैला हुआ है, और ईस्ट में अरावली माउंटेन रेंज से लेकर पाकिस्तान बॉर्डर तक, यहाँ वेस्ट तक फैला हुआ है. ऑलराइट, और यहाँ पर कैसे टाइप का क्लाइमेट पाए जाते हैं, जैसे कि गर्मी और सूखापन ज़्यादा से ज़्यादा पूरे साल ही ऐसे होते हैं, गर्मी और सूखापन. राइट, यहाँ पर होते. और यहाँ पर कोई कोई एरिया पर बहुत क्या भी होता है, इसका कुछ हिस्सा भी पत्थरीला भी है. ऑलराइट, एंड ये डेजर्ट में बहुत कम बारिश पाए जाते हैं. All right, I hope you understood till here, children. Please do underline these difficult words, and please do the reading practice at home. Do the correct pronunciation. Learn the correct pronunciation. All right. So this is it for today, children. I hope you understood. All right. Please study well and do take care. Thank you.